Hello bachcho, let's read the question. So the question says better processing and recycling can feed 11% of the world's population, many of whom are in India, that goes hungry. Food loss and waste is an area in the food and agriculture sector where adaptations to climate change are important. Food loss and waste generates about 8% of the global greenhouse gas emissions. A recent study predicts that emissions associated with food waste could increase further. Hence, the message for World Food Day observed on October 16th was that climate is changing, food and agriculture must too. Natural capital loss, meeting the food needs of growing population in India, 1.7 billion by 2050, while reducing food loss and waste poses a serious challenge. Wasting a kilogram of wheat and rice would mean wasting 1500 and 35 liters of water respectively that goes into production. Globally, almost 250 kilometer cubic of water and 1.4 billion hectares of land are devoted to producing food that is lost or wasted. According to the Food and Agriculture Organization, every year around 1.7 billion tons, or almost one third of the food produced for human consumption, are lost or wasted globally. The associated economic and environmental costs of this loss are around $1 trillion. $700 billion and $900 billion, respectively. In India, the value of food wastage, harvest, and post harvest losses of major agriculture produce is estimated at around 92,000 crore rupees per annum at 2014 wholesale prices. In the food value chain, 24% of the global food loss and waste occurs at the production stage, 24% during handling and storage, and 35% at the consumption. These three stages taken together account for more than 80% of the global food loss and waste. Quantifying food waste along the value chain by leveraging the recently released UN Global Food Loss and Waste Protocol as a framework can help India. So बच्चों क्वेश्चन करने से पहले we'll understand the passage समझते हैं. तो बेटर फूड प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग 11% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को जो भूखे सोते हैं, जिसमें सबसे अधिक इंडिया में, उन्हें भूखा नहीं सोने देती, उन्हें खिला सकती है. बहुत इंपॉर्टेंट है फूड वेस्टेज को रोकना. ये 8% ऑफ टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को प्रोड्यूस करता है सिर्फ फूड वेस्टेज. इसलिए वर्ल्ड फूड डे पे ये मोटो या ये स्लोगन या ये मैसेज दिया गया था जो अक्टूबर 16 को सेलिब्रेट किया जाता है कि क्लाइमेट बदल रहा है, फूड और एग्रीकल्चर को भी बदलना चाहिए. तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि मान लो अगर आप 1 किलोग्राम वीट, गेहूं को और राइस को वेस्ट करते हो, चावल को वेस्ट करते हो, तो आपने 1500 लीटर और 3500 लीटर पानी व्यर्थ जाने दिया, वेस्ट कर दिया. ठीक है, ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर क्यूब पानी और 1.4 बिलियन हेक्टर्स जमीन का सिर्फ फूड वेस्टेज में हम लोग कर देते हैं यूज. और फिर और सारे डेटा दिए हुए हैं कि 1.1 ट्रिलियन डॉलर, $700 बिलियन और $900 बिलियन का फूड वेस्टेज हो रहा है. और इंडिया में भी 92,000 करोड़ पर एनम पर साल का फूड वेस्टेज हो रहा है. ये वैल्यू चेन में 24% फूड लॉस है जो प्रोडक्शन पे होता है, 24% हैंडलिंग और स्टोरेज में होता है, फिर 35% कंजम्पशन पे होता है. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक फ्रेमवर्क चाहिए जहाँ पे हम फूड वेस्टेज को कम कर सकें. नाउ food wastage globally every year is equal to option A 1.7 trillion, option B India's population by 2050, option C estimated India's population by 2050, option D none of the above. तो बच्चों हर साल 1.7 बिलियन टन्स फूड वेस्ट हो रहा है, राइट. एंड पैसेज में साफ साफ मेंशन किया है कि एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2050 वुड बी 1.7 बिलियन. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी, estimated India's population by 2050. Option C. I hope you understood it well. Best of luck.